Hi everyone. So this is Office 365 Exchange and Admin Center tutorial. So in this class, we will discuss about configure message delivery restriction for mailbox. After that, discuss about same class configure message size limit for the mailbox in Exchange Online Center. Right? So move out to practical session. So first need to open Admin Center like this. After that, go to the admin option. Both option is available on Microsoft Admin Center. So go to the show all option, scroll down and open Exchange Admin Center. Yeah. So just like everyone, we are creating a both concept on Pavan. So first need to open a mail ID. After that, go to the mailbox. So everyone, you can see option is available message delivery restriction, message delivery restriction, right? And message size restriction both. Right. So first discuss about message delivery restriction. So click on a message delivery restriction option. So accept all messages from. If I am talking about if any person are sending mail to Pawan, so क्या इन सारे पवन की मेल आईडी को all members just like if I am talking about this scenario like if Pradeep, Rabi, Mohit, Sami and like Ragni any one person are sending mail to Pawan. So क्या सारे members के mail receive होनी चाहिए and send होनी चाहिए या नहीं? So this is the first concept. Second concept, second concept, if any person are sending mail to Pawan, if person is a like unauthorized person, so क्या इस मेल को हमें ब्लॉक कर देना चाहिए? So you can see block message from. So both option is available. Otherwise, just like a Pawan designation is a CEO, CTO level, no need to like communicate with all members of the teams. वो only एलिजिबल हैं, वो only चाह रहे हैं कि मुझे सम कंपनी के हर अथॉरिटी से ही कम्युनिकेट करना है. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीईओ लेवल्स, सो सीईओ कम्युनिकेट करेगा सीटीओ, सीएफओ, सीईओ, फाइनेंस हेड, आईटी हेड एंड लाइक इंफ्रा हेड, है ना? इनसे वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं. Right? After that, these all participants are communicate between low-level management teams. Right? So वो इनको permissions allot कर सकता है, like set and add a sender and add the mails, add the message. Right? If I am talking about like पवन side, पवन चाह रहे हैं कि मुझे only आईटी टीम्स मेल ड्रॉप आउट कर हमें मेल सेंड कर सकते हैं, राहुल आनंद मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, कॉन्टेक्टर मुझे सेंड कर सकता है मेल, लाइक टेस्ट मेल सेंड कर सकता है, पवन राय मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. सो इतने ही पार्टिसिपेंट इनको मेल सेंड कर सकते हैं. रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट विल ट्राई टू सेंड दिस एनी मेल टू पवन, सो इट्स नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लाइक दिस सिनारियो. राइट? सो अभी के लिए मैं सारे पार्टिसिपेंट को अलाउ कर रहा हूँ. ऑल मेंबर्स आर सेंडिंग मेल टू पवन, मीन्स मैंने अलाउ कर दिया ऑल सेंडर्स. राइट? सो इफ ऑल मेंबर्स इस कंपनी के ऑल मेंबर्स पवन को मेल सेंड कर सकते हैं तो इजीली पवन इज रिसीव द मेल. राइट? बट मुझे पर्टिकुलर मेंबर के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, हमें पर्टिकुलर मेंबर्स को ही अलाउ करना है कम्युनिकेशन के लिए. सो वन ऑप्शन इज अवेलेबल सेलेक्ट सेंडर. सो हम सेंडर को सेलेक्ट करके उन्हें इनेबल कर सकते हैं. राइट? if required sender to attribute just like if a third party if any other person are try to send the mail, so like just like थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई वेंडर चाह रहा है मेल सेंड करना, सो उन्हें भी हम अलाउ कर सकते हैं. राइट? अभी मैंने सारे को अलाउ कर रखा है. सो दैट इफ जस्ट लाइक मुझे किसी पर्सन को ब्लॉक करना है, जस्ट लाइक दीप इज अ मेंबर, इफ दीप इज सेंडिंग मेल टू मी, सो वो मेल ब्लॉक हो जाए. राइट? सो हम इसके लिए हम ट्राई करते हैं जस्ट लाइक आशुतोष, है ना? सो ये मेल ये लाइक प्रोसेस हम कॉन्फ़िगर करते हैं बिकॉज बोथ मेल इज रिसेंटली ओपन इन लाइक माय लैपटॉप. राइट? सो ऑप्शन इज सेम. सो हम रिस्ट्रिक्शन पे आते हैं एंड सेलेक्ट द सेलेक्टेड स्टैंडर्ड. राइट? हमने यहाँ पे मेल आईडी जो सेलेक्ट किया, मेल आईडी इज अ दीप. राइट? एंड कॉन्फ़िगर सेव. सो समटाइम्स इट्स टेक अ टाइम लाइक जस्ट 5 मिनट्स. राइट? ये चेंजेस को कंप्लीटली एक्सेप्ट करने में 5 मिनट्स भी ले सकता है. राइट? सो दैट ओपन अ दीप मेल आईडी like this. So this is a deep mail id and if deep is sending mail to आशुतोष, दीप चाह रहे हैं मेल सेंड करना आशुतोष को
test mail. Test, like this is a test mail, right? So दीप ने सेंड कर दिया एंड मेल इज सक्सेसफुली सेंडेड अनडिलीवर्ड। ये अनडिलीवर्ड हो गया बिकॉज क्यों अनडिलीवर्ड हो गया? क्यों अनडिलीवर्ड हो गया ये मेल? बिकॉज यू कैन सी डिलीवरी हैज फेल ऑन दिस, बिकॉज उन्होंने इनके मेल को ब्लॉक कर रखा है, राइट? You do like do not have a permission to send, right? बट दीप इससे किसी थर्ड पर्सन को ट्राई करते हैं मेल सेंड करना, सो इजीली कर सकते हैं, राइट? आप देख सकते हैं दीप का कोई भी मेल इनको रिसीव नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू परमिशन, राइट? बिकॉज इनको कोई परमिशन अलॉट नहीं है यहाँ पे, इनके ब्लॉक असाइन कर दिया गया है, राइट? बट इफ दीप इज ट्राइंग टू सेंड मेल टू डिफरेंट पर्सन, लाइक दीप पवन को मेल सेंड करना चाह रहे हैं, लाइक पूरन को, अदरवाइज पवन को, सो टेस्ट हाय, राइट? सो इट्स मेल इज सेंडिंग, ये मेल सेंड हो गया पवन के थ्रू, है ना, प्रॉपरली, बिकॉज पवन अभी ब्लॉक नहीं थे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक मैं अभी फिर से ओपन करता हूँ, राइट? एंड मेल इज अ लाइक पूरन, राइट? आफ्टर दैट गो टू द मेल बॉक्सेस एंड ओपन दिस। अभी क्या कर रहे हैं कि हम सेंड एट, हमने सेलेक्ट कर दिया पूरन की मेल आईडी, like this, scroll down, mail is a Puran. Okay, Puran is not visible. So select a mail ID is Pawan and confirm. है ना? And save. So again open a mail ID and go to the send option and search the mail is Pawan and try to send one test mail. Test. Send it. Again. Okay. So everyone, sometimes it's take a 5 minute, right? So after 5 minutes, if you are trying to check, सो इट्स नॉट वर्किंग, राइट? पवन का मेल यहाँ पे सेंड नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, राइट? सो अभी हम आफ्टर 5 मिनट के बाद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो मेल आईडी इज अ पूरन, नॉट अ पवन। ओके, 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 सो सेंड मेल टू पूरन, मेल इज अ टेस्ट मेल एंड सेंड इट। सो इजली ईमेल क्यों लाइक सेंड आउट हो पा रहे हैं? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में शेयर कर रखा है कि समटाइम्स इट्स टेक अ 5 मिनट, राइट? ये पॉलिसी कॉन्फ़िगर होने में 5 मिनट्स भी लग सकते हैं, है ना? सो चेक करना चाहिए क्या ये पॉलिसी अभी वर्किंग में है या नहीं, राइट? अभी ये वर्किंग में है, सो मे बी इट्स टेक अ 5 मिनट। सो हम पाउंड पे भी अप्लाई करके देखते हैं। ओके, इट्स टेक अ 5 मिनट। ओके, so it's not working because I am enable this policy to Puran, right? So need to open a deep mail ID and go to the mailbox. After manage message from delivered, select add a message. After that, select
Puran and confirm. After that, open Puran mail ID एंड मेल ब्लॉक कौन कर रहा है, किसको हम रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं. सो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं दीपक को, है ना. सो नीड टू ऐड द मेल आईडी ऑफ दीपक, राइट. कंफर्म एंड सेव. आफ्टर दैट paste like hi and send. So everyone you can see it's working, right. बिकॉज अभी प्रीवियस हमने क्या किया, हम बाय मिस्टेक हम दीप की मेल आईडी नहीं, पूरन एंड पब्लिक लाइक पूरन एंड पवन की मेल आईडी सेम मेल में ही ब्लॉक कर रहे थे. सो इट्स लाइक प्रॉपरली वर्किंग बिकॉज वो मेल आईडीज हमने ओपन नहीं किए थे, है ना. सो एज इट इज सेम इफ नीड टू इनेबल द लाइक this option, so you can enable it. After that, like resizing, right. So हमने डिस्कस कर लिया मेल फॉरवर्डिंग, हमने कंपनी आपसे के साथ डिस्कशन कर लिया मेल like message delivery restriction. So last is a message size restriction. So go to the size option. Everyone, Microsoft is provide 0 to 0 to 1,53,600 KB. Means just like you can see 35,840 KB to 36,864 means receiving size and mailing size. So इसको हम like चेंज भी कर सकते हैं like 62,000 to 62,000, right. So it's totally changeable. If I am talking about like one time we create like change the mail, so आप पूरे one time में display करो. After that this is a like mail flow setting. So आप यहाँ से like message size restrictions कर सकते हैं, all को mail forwarding and like mail delivery restrictions enable कर सकते हो within a single time. If need to create a policies, so click on a policies like sharing policy default. By default each and every is working, right. So hope you understand.